Hello, my shining stars. How are you all? I hope you all are doing great. Okay, today I, Garima Mishra, is again ready with our new topic, and that is from our book Footprints Without Feet. Yes, ये हमारी इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है. आई होप जो पढ़ चुके हैं, अगर वो फिर से सुन रहे हैं तो उन्होंने ऑलरेडी सुन रखा होगा. फॉर द न्यू कमर्स, those who have entered in class and who are going to enter in class 10th, it's new for them. And the name of the chapter is A Triumph of Surgery. Yes, बच्चों, हमारे चैप्टर का नाम है A Triumph of Surgery. First of all, triumph क्या होता है? Yes, कोई बताना चाहेगा? See, I know it's not a live session, so whatever questions while or during my chapters I keep asking, I want कि आप उनके आंसर्स देते रहें, तो मुझे भी अच्छा लगेगा and you will also feel interesting about the chapter. According to me, triumph means the victory of the surgery. अभी कैसी सर्जरी है, क्या है? I will move inside the chapter. We will move inside the chapter, and while we are moving into the chapters, मैं बीच बीच में आपको क्वेश्चंस पुट अप करूंगी, आप प्लीज उनके आंसर्स देते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. बेटा, ये चैप्टर है एक डॉग के बारे में. द डॉग इज ओवर पैम्पर्ड, ओवर लविंग. जैसे हम सब, कई बार ऐसा होता है, बहुत ही रिलेट करेगा ये चैप्टर आपसे, क्योंकि कुछ लोग जो कि डॉग लवर्स, पेट लवर्स होते हैं, उनके घर में डॉग्स होते हैं या कोई भी अदर पेट एनिमल्स होता है, तो वो उनके लिए एक स्पेशल जेस्चर रखते हैं केयरिंग का. सबका अपना अपना तरीका होता है, डेफिनेटली. बट समटाइम्स व्हेन वी बिकम ओवर प्रोडक्टिव अबाउट थिंग्स, तो वो चीजें कभी कभी अच्छी नहीं होती हैं. सेम इस चैप्टर में हुआ है इस डॉग के साथ. लेट मी इंट्रोड्यूस द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी. इस स्टोरी के मेन 3 कैरेक्टर्स हैं. नंबर फर्स्ट, एंड दैट इज द ऑथर ऑफ दिस, नॉट ऑथर, ही इज, इस स्टोरी के मेन 3 कैरेक्टर्स हैं. बेसिक 3 कैरेक्टर्स आर देयर इन दिस स्टोरी. फर्स्ट, who himself is the writer of the story, and he is also playing as a doctor in this story. He is a veterinary doctor who is Mr. James Harriet. He is also the narrator, the writer of the story. Then second character, the dog Tricky, and the third character is Mrs. Pumphrey, the lady, the owner of the pet, Mrs. Pumphrey. ये 3 बेसिक कैरेक्टर्स है. नाउ आई एम एंटरिंग इनटू द स्टोरी. और बेटा, मैं कीवर्ड्स को बार बार यूज करूंगी सो दैट यू कैन remember the story by the keywords only. Whenever, suppose if this chapter comes as an extract or MCQ basis, you should remember the keywords. कोई भी चैप्टर हो, अगर उसके कीवर्ड्स आपको पता है, आप उसको अपनी स्टोरी को अपने अकॉर्डिंग रिकॉल कर सकते हो, अपने आंसर्स को अपने अकॉर्डिंग प्रैम्पर कर सकते हो. ठीक है, तो मेक श्योर कि आप कीवर्ड्स की बहुत अच्छे से फोकस करें. शुड वी स्टार्ट? लेट्स स्टार्ट. I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at appearance. There was a dog, and there was a person who was passing from the street in his car, and he was none other than else the doctor, the James Harriet, the writer. When he was passing from his car, he noticed a bulgy dog. A dog who was totally bulging. His body was looking like a stuffed sausage. Like बहुत ही overweighted, over bulging वो dog लग रहा था. It seems like he is having 4 legs in his body. And his eyes was totally red shot. Red shot eyes means the dog's eyes was totally red. The eyes were teary, and also mucus, including mucus. The eyes were very teary, mucousy, and red also. So when he noticed, being a doctor, James Harriet noticed the dog
and he found exactly that the dog is not well at all. So here, the owner of the dog, Mrs. Pumphrey, hastened to explain. She started explaining to the doctor. He was so listed, Mr. Harriet. He seemed to have no surgery. I thought he must be suffering from malnutrition. Malnutrition is a term which is used for when we don't have enough nutrition in our body. जब हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन कम होता है तो हम मैल न्यूट्रिशन बोलते हैं. तो शी स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग टू द डॉक्टर दैट सी डॉक्टर माय डॉग वाज सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन. दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड गिविंग हिम अ लॉट ऑफ और इनफ फूड, enough diet. I start keeping my dog on enough diet and rich diet. Then, what she was exactly giving to his dog? She was providing him some malt, cod liver oil, and a bowl of Horlicks at night. Oh my God! मैं सुन रही हूँ, मुझे यहाँ से इतना over लग रहा है. So what was happening to the dog? But it was not intentional. एक pet owner के लिए maybe she was too much protective and she loves her dog a lot. तो ये उनकी care थी. But sometimes being too much protective, being too much careful about few things doesn't make things right. तो कई बार चीजों को let go करना चाहिए. Let the things be in their way only. Let the person be in their way. क्या ऐसा बोलते हैं ना कि इंसान को जैसा वो है उसको वैसा रहने देना चाहिए कभी कभी. And that is better. वही better होता है. Okay, let's move ahead in the story. So what happens next? Oh, I did for a bit, but he seemed to be weak. I had to relent. He does love cream cakes, chocolates, so I can't bear to refuse him. मुझे लगा मेरे डॉग को ये सारी चीजें पसंद है तो मैं मना नहीं कर पाई. शी सेड. मैं उसको देती रही, रिच डाइट देती गई. And then he had never been known to refuse food. कई बार ऐसे मैंने बहुत पर्सन्स को देखा है भाई. आई हैव सीन मेनी पीपल इन माय लाइफ जिनको कुछ भी खाने को तो समटाइम्स सो व्हाट इफ दे आर टोटली फुल, फिर भी वो खाते चले जाएंगे. और उस डॉग ट्रिकी का भी सेम हाल था. ही वॉज लाइक आप उसको देते जाओ. द पेट वॉज लाइक आप देते जाओ, वो खाता जाएगा. ही विल नॉट बी कंटेंटेड. रिमेंबर yesterday we have used the word that dog was not contented by the food any time. Therefore, Mrs. Pumphrey उसको provide करती गई and the dog kept on having that food. And that's why the dog became so ill. Then, well, he has little walks with me, as you can see, but Hotskin, the gardener, has been down lumbago, so there has been no ring throwing lately. उन्होंने एक गार्डनर रखा हुआ था एंड शी सेड दैट मेरा जो गार्डनर है he was suffering from backache, that's why he's not coming these days. Due to his absence, my dog is not able to exercise of ring throwing. वो अपने डॉग को एक रिंग थ्रोइंग एक्सरसाइज कराती थी जो कि ड्यूरिंग दीज डेज was not happening. तो वो उसका और भी ज्यादा बुरा हाल हो रहा था and she was all explaining to the doctor. कई बार ऐसा होता है जब हमसे कुछ गलती हो जाती है, कहीं ना कहीं वी नो दिस थिंग, वी ऑलरेडी न्यू इन आवरसेल्व्स कि हाँ ये चीज हो गई. दैट्स व्हाई हम उसको पहले से ही एक्सप्लेन करने लगते हैं. वो होता है ना, इट्स वेरी मच रिलेटेबल. तो सेम थिंग वाज हैपनिंग विद Mrs. Pumphrey. She started explaining to the doctor that I have done this because malfunctioning was happening to him and that's why I had started providing him a lot of food. So अब now Mr. Harriet इसमें क्या एक्शन लेते हैं, let's see. I tried to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his food right down, give him more exercise, he is going to be really ill. Doctor ने क्या बोला? Now I'm going to be very serious. I'm going to be very stern. It is a stern warning for you that stop and have a cut in his diet and reduce his diet so that he can be okay. Now, next. I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for cold weather and a raincoat for the wet days. He struggled on, dropping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey.
अब मिसेस पफरी ने क्या स्टार्ट किया, आई नो शी वॉज रिच, ऑफकोर्स रिच हैं तो उनके पास उनकी डॉग्स की डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की एसेसरीज भी होंगी. शी स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग that my dog is having this kind of wardrobe. रेनी सीजन की अलग wardrobe है, समर सीजन की अलग है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ coats and clocks are there for my dog. So all these things she was explaining to the doctor. Then the poor lady almost swooned. She was sure he would pine and die if he did not see her every day. But I took him in a firm line. Tricky was very ill. This was the only way to save him. In fact, I thought the best would be taken without delay. अच्छा, उस डॉग को देखने के बाद कहीं ना कहीं डॉक्टर हैरियट के मन में आ चुका था दैट आई शुड कीप दिस डॉग इन माय सर्विलेंस. मुझको उसको अपनी केयर में रखना है, उसको आई हैव टू टेक केयर ऑफ द डॉक्टर और आई हैव टू टेक केयर ऑफ द डॉग. सो मुझे उसको ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा. तो ही वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड कि मैं अब मिसेस पम्फ्री को ये एक्सप्लेन कर दूं दैट दिस डॉक्टर नीड्स टू बी इन द हॉस्पिटल. नाउ व्हाट हैपेंड, लेट्स सी. I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. Suddenly, one day, Miss Pumphrey called to the doctor because the dog was continuously vomiting. उसको continuously vomiting आ रही थी. Already, हैरियट ने उनको वार्न कर दिया था, बट क्योंकि उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, सो वो डॉग जो है और ज्यादा सीरियसली लेवल पे इल हो गया. देन शी कॉल्ड द डॉक्टर एंड द डॉक्टर केम एंड डॉक्टर कैरिड द डॉग into his car. When he carried the dog inside his car, all the staff, all the working, all the helping staff of the house started keeping all the dog's stuff keeping inside the car. उसके blankets रखने लगे, उसके clocks रखने लगे. Clocks means long coats, kind of winter coats. क्लॉक्स, ब्लैंकेट्स, रेन कोट, डिफरेंट टाइप की जो भी उसकी एसेसरीज थी वो उन्होंने कार में रखनी स्टार्ट कर दी. एंड ही वॉज ऑलमोस्ट डन. हु? डॉक्टर. मिस्टर हैरियट वॉज लाइक, नाउ माई कार डोंट हैव स्पेस इवन टू ब्रीथ. सांस लेने की भी जगह नहीं थी उस कार में. सो स्टार्टेड मूविंग हिज कार so that the people stop putting things inside his car. Then suddenly he saw that Mrs. Pumphrey came and threw some little left blankets from the window of the car, inside the car. Then what happened? The entire staff was roused and mazed, rushed in and out, bringing his day bed, night bed, start by putting things like bed, wardrobe, or extra cheese doggy. Then what happened? When they moved towards the hospital, out on the road, I glanced down at a pathetic little animal gasping on the seat by my side. Gasping पता क्या होता है? जब आप बैठे होते हो और आप बहुत ही लेजी फील कर रहे होते हो और आप इस सिचुएशन में नहीं होते हो कि आप कुछ अपनी एक्टिविटी शो कर पाओ. So it was gasping like that. Then I patted the head. Tricky made a brave effort to wag his tail. जैसे हम कभी किसी डॉग को we try to like effort डालते हैं डॉग को ऐसे पुचकारने की या उनको kind of उन्हें जो भी उनका जेस्चर होता है, जैसे भी आप अपने डॉग जिसके पास पेट्स होंगे वो शायद इस बात को समझेंगे कि आप उनको उनके हेड पे रब करते हो, उनके हेयर को रब करते हो, तो आपको एक स्पेशल लविंग जेस्चर शो करते हैं. रिवर्ट में दे स्टार्टेड मूविंग देयर टेल, स्टार्टेड लिकिंग यू, है ना. सो because that dog was totally ill, so it started giving its best and tried to move his tail. बहुत ही धीरे से उसने अपनी टेल को मूव किया जैसे तैसे, because the dog was totally ill. Yes. Then at the surgery, the household dog surged round me. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes when put down. Lay motionless on the carpet, the other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided it was an uninteresting object and ignored him. होता है भाई, होता है. आप भी जब कहीं नई जगह में जाते हो तो ऐसे ही होता है. डॉक्टर हैरियट जब उसको लेकर के हॉस्पिटल के अंदर गए, देन ही सॉ कि उन्होंने जैसे ही from his lap he carried off the dog. Then the rest of the dogs present in the hospital started kind of
identifying him, but later on they refused him. They stay away from the dog, that Tricky. And then what happened? Let's see. Okay. At the end of the chapter, I would like to give you some questions, and it's mandatory for all of you to answer that. Okay, please do answer. When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friends. After rolling him over, thoroughly inspecting him, the dog moved off down and garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. The doctor brought the dog in the atmosphere of other dogs also. आप एक बच्चे को बहुत दिन तक अकेला रखो और फिर आप एक बच्चे को 10 बच्चों के साथ में लेके जाओ. You will find the difference. Same thing happened with the dog, with Tricky also. अभी तक Tricky was staying in a very rich home. He was getting rich food, but still that dog was alone. And the dog was overprotected, which maybe he did not want that. Maybe that dog did not want that kind of attention. Sometimes, जैसा कि मैंने बोला, sometimes let the things be in their situation. ठीक है? So, अभी the dog Tricky got an atmosphere in which he was imagining him to be in such situation with the other dogs. He was enjoying, he was rolling, he was, running with them, and his atmosphere was totally changed. Then what happened? Now see, he has done something very suspicious and astonished. Let's see what he has done. See, there was unusual headlong rush, followed by the sounds of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the other's dog, he was liable to have some competition for the last part of his meal. He was having competition while he or those dogs were having their foods. They try to have competition. Who can eat the last part? Who is going to eat the most of the food from the things which were given to them, which were offered to the dogs. Then, when they had finished, Tricky took a walk around and shining bowls, licking casually inside or two of them. Next day, an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his ways toward it. क्योंकि अब ये एटमॉस्फेयर ट्रिकी के लिए बिल्कुल नया नहीं रहा. वो उन डॉग्स के साथ he became very familiar and he started eating, as I told, enjoying, rolling, licking, barking, and all the extra activities which other dogs do, he also started and joining them. So, आप नोटिस कर रहे हो, उसका एटमॉस्फेयर चेंज हुआ, उसको इस चीज की नीड थी. So that dog Tricky started recovering from here. अभी when we started recovering from here ना, ये already recover हो जाता है. ठीक है, बोलते हैं ना, आपका मन अच्छा होना चाहिए, शरीर तो ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है. और अगर मन खराब है तो आप अंदर से अनहेल्दी फील करने लगते हो. फिर आपको पता चलता है, नहीं, मुझे ये भी है, मुझे ये भी है, मुझे ये भी है. So same thing was happening. I'm quite liking the story. I don't know why, but I am. Okay, let's move ahead. Up here, the dog is enjoying in the hospital a lot, but his housemaster, house owner, Mrs. Pumphrey, was all alone. So she was continuously making dozens of calls to Mr. Harriot. Hello sir, is my dog okay now? Is he eating? Are you feeding him properly? Is he missing me? Is he sad or this and that? But Mr. Harriot was like, you don't know what is happening here. Yes, he's alright. The atmosphere has been totally changed. And the dog was needing that changed. Okay, let's see. The word convalescing. The word convalescing seems to do something to Mr. Pumphrey. She started to bring round fresh egg, 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength. For a happy period, my partner and I had 2 eggs
each for breakfast. But when the bottles of wine begin to arrive, the real responsibilities of the situation begin to draw on the household. It was enriched Ricky's blood. Lunch became ceremonial, occasional, with 2 glasses of wine before serving during the meal. Oh my God, here's a party for the doctors as well. अभी क्या चलने लगा हॉस्पिटल में, देखा आपने ना? हॉस्पिटल में ये होने लगा कि जैसे कि उनकी जो हाउस ओनर आई एम सेइंग, जो पेट ओनर थी मिसेस पॉम्फ्रे, शी वाज सो मच वरीड अबाउट हिज डॉग. तो वो क्या करने लगी, शी स्टार्टेड सेंडिंग 2 dozens ऑफ एग्स एंड वाइन्स बॉटल. क्योंकि वाइन बॉटल क्या कर रही थी, उसके ब्लड को इम्प्रूव कर रही थी, और एग्स क्या कर रहे थे, उसकी बॉडी के प्रोटीन और अदर न्यूट्रिशन उसको प्रोवाइड कर रहे थे टू मेक दैट डॉग स्ट्रेंथन, है ना. तो अब what they people were, Mr. Harriet and others started enjoying. अब वो क्या करते, उस एग में से कुछ एग्स को निकालते, वो खुद एग्स का ब्रेकफास्ट करते एंड स्टार्टेड हैविंग 2 glasses ऑफ वाइन्स टुगेदर. खुद वाइन्स भी पीने लगे. उनके लिए तो ये ओकेजनल पार्टी बन गई भाई, कि मिसेस पम्फ्रे भेजते रहे, और दे वर लाइक ओ माय गॉड व्हाट गुड डे फॉर अस. सो ये होने लगा. नाउ लेट्स मूव अहेड. We could hardly believe it when Brandy came to put a final edge on Ricky's constitution. For a few nights, the other fine spirit was rolled down, inhaled, and reverently drunk. There were days of deep content, starting with the extra egg in the morning, improved the sustained by the midday wine, finishing luxuriously round the fire with the brandy. Oh my God, इतनी luxury तो शायद उस dog को वहां नहीं नसीब हुई. Yes, she started also sending brandy, and it was magical for the doctors that they were also enjoying thoroughly, and they were feeling like we should keep this guest forever in a hospital. हमको तो ट्रिकी नाम के गेस्ट को हमेशा अपने यहाँ रखना चाहिए, सो दैट वी कैन ऑल्सो बी कंटेंटेड. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. Within minutes, about 30 feet, gleaming black metal. Now what happened? Now the dog was totally fine. He was rolling, barking, became so strengthened and happy also. Dog पूरी तरह रिकवर हो चुका है, फिट हो चुका है. अब सडन है, अच्छा, I missed this thing. Actually, I'm not reading out the whole story. I'm not reading word by word. मैं crux बना चुकी हूँ उसका, and I am giving you a thorough content of the story कि basic content क्या है. I'm not reading it line by line. Here's the book provided to you all, so you will read it thoroughly again after my explanation, and you will get the story nicely. And after that, whatever PDF will be provided, you have to solve that. And if any query you find out, kindly ask us. Okay, let me remember, please go and join our Telegram channel also. Kids, all my students, it's my humble request, please जाओ और Telegram को भी आप ज्वाइन करिए, क्योंकि वहां पे आपको, चाहे आपको बेबी जो भी मैथ्स के सर, अंकुर सर जो भी पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, आपको उससे रिलेटेड कंटेंट मिलेगा. समटाइम्स हम PDF भी प्रोवाइड करेंगे इफ यू विल विश, ठीक है. और नहीं तो एक्सरसाइज और प्रैक्टिसिंग के लिए आपको डेली वहां पे कुछ ना कुछ मिलेगा रिलेटेड टू द चैप्टर. ओके, मूव बैक. लेट्स कम बैक ऑन द स्टोरी. नाउ within minutes, about 30 feet gleaming black metal drew up outside the surgery. The chauffeur opened the door, and I could just make the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better? उन्होंने देखा एक शाइनी मेटल एक कार आकर के सामने रुकी हुई है, और वो उससे कौन उतर रहा है? यस, मिसेस पम्फ्रे. और शी इज ट्रेम्बलिंग, उनके पैर लड़खड़ा रहे हैं, एंड हर लिप्स आर यस काइंड ऑफ शिवरिंग, और उन शिवर करते हुए लिप्स से वो पूछ रही हैं. और उन्होंने, मिस्टर हैरियट ने तो गेस कर लिया दैट Mrs. Pumphrey is here now, and she's asking that, oh, Mr. Harriet, is he okay? Is he well? और मिसेस हैरियट ने बोला, yes ma'am, he is absolutely well. Even he is a totally changed dog now. जैसा वो था वो अब वैसा नहीं है. अब
the dog is far better than in the condition which he came in this hospital. Okay? Now I walked through the house into the garden. A mass of dogs were hurtling round and round. Long in their midst, ears flapping, tail waving, was little golden figure of Tricky. एक गोल्डन कलर का ट्रिकी जिसके कान ऐसे ऐसे कर रहे थे और वो बहुत सारे डॉग्स के बीच में था और उनके साथ एंजॉय कर रहा था. ही वॉज रोलिंग एंड एंजॉइंग. तो वहां से मिस्टर हैरियट ने उस डॉग को कैरी किया. I carried him back along the passage in front of the house. The sheriff was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he put off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. जब आप किसी अपने को बहुत दिन तक नहीं देखते और फिर आप अचानक देखते हो तो क्या होता है? आप जा करके दौड़ के उनके पास जाते हो and you used to hug them. If you are human being and if you are an animal, then of course you will climb and jump toward your owner. Same thing happened. वो मिस्टर हैरियट की लैप से उतर के और उसने जाकर के जंप किया. He swooped, जैसे swooped का मीनिंग होता है किसी की तरफ क्विकली जाकर के जंप करना, है ना, स्लाइटली डाउन उस पोजीशन में. सो ही स्वीप्ड इन द लैप ऑफ मिसेस पम्फ्रे. वो मिसेस पम्फ्रे की गोद में चला गया. मिसेस पम्फ्रेज लैप. शी गेव अ स्टार्ट से कहते हैं ना, oh my dear. She started doing like this and then had defended herself as swarmed over her, licking her face and barking. He started barking after seeing her owner, and also he started licking her. During the excitement, I helped Short to bring out beds, toys, cushions, coats, bowls, none of which had been used. उसकी इतनी सारी एसेसरीज उन्होंने भिजवाई थी बट नन ऑफ द एसेसरीज वर यूज. वो सारे बोल्स, ब्लैंकेट्स, टॉयज एज इट इज मिस्टर हैरियट ने उस जो ड्राइवर आया हुआ था उसकी हेल्प से कार में पूरा का पूरा स्टफ एज इट इज रखवा दिया, which was not used at all. Then Mrs. Pumphrey leaned out of the window. Tears shone in her eyes, lips trembled. Oh, Mr. Harriet, she cried, how can I ever thank you? This is a triumph of surgery. Here we are done with the chapter. और उन्होंने अपने उस डॉग को लेने के बाद कार से वो झांकी और डॉक्टर को टीयरी आइज के साथ गुड बाय कहते हुए she thanked the doctor and she also said that it was a triumph of surgery. कि ये एक सर्जरी की जीत थी. और बेटा इट वॉज नॉट अ सर्जरी, ये जीत थी एक इमोशन की, ये जीत थी. आप मैं इसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ. आई वॉन्ट द कैरेक्टर स्केच इफ यू कैन राइट. अगर आप चाहें तो यू कैन शेयर द पिक ऑफ द कैरेक्टर स्केच ऑन टेलीग्राम एंड यू कैन ऑल्सो टेक्स्ट. और आई वॉन्ट द कैरेक्टर स्केच ऑफ 2 persons. ये मेरा पर्सनल वो मैं आपसे मांग रही हूँ. ऐसा नहीं है कि किसी का कैरेक्टर स्केच आने वाला है, बट दिस इज व्हाट आई वॉन्ट. आई वॉन्ट द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पम्फ्रे एंड ऑल्सो मिस्टर हैरियट. इसके बाद आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू MCQ sheet of this chapter and you people will solve this chapter. And if you find any query, any problem, so you can send messages on Telegram and you can also comment us in YouTube. Now the chapter is completed. So all the questions you are going to get on Telegram. Again, I am requesting you all to please join Telegram and also share, subscribe Zero Nitty classes, which will lead you from zero to infinity. Yes. And thank you so much. And that's all for the day. Bye-bye. Take care.